Hello and Assalamu alaikum. This is Nasra Taj from my YouTube channel, Nasra Taj Not So Perfect. I hope you're well and life is good because you're worthy of life. I was thinking of sharing something with you, and that is how I channelized my thoughts today, or how I can help other people as well how to channelize their thoughts when they are kind of overwhelming, when they are pulling us down, and when they are not helping us. And we keep kind of thinking about things that are uh, kind of rushing into our head, and they really don't make any sense, and we don't know how to deal with them. A usual occurrence in my life. It keeps on happening almost every second day. Whenever I wake up, I am overwhelmed with thoughts. But these days, I have wanted to kind of work on myself and think of how to deal with those times. Today, when I woke up in the morning, I was again thinking about not just one thing, there were multiple things. It was like something is making all those thoughts kind of rush into my head, into my brain, and kind of really overwhelm me and putting me in a panic mode, which is not a good situation, which is not a good situation at all. I go through it almost every second day. So I had my cup of tea in the morning, and then I'm sitting in my room, and those thoughts are coming into my mind one after another, one after another, and not just one after another. They are like overlapping constantly. For example, list just a few of my thoughts that were there in the morning. Like when I woke up, I was thinking, how am I going to spend the day? Oh my God, what am I going to do? It's a long day. What should I be doing throughout the day? One thing. Second was that I was thinking about my backache because my backache is kind of back. My backache is kind of back. Isn't that funny? Back. Then the normal house chores. And when you think of the house chores, there is a list of things that hit you. Next thought was about my finances. Then I thought I need to do something about it. The first thing that hit me or click in my mind was that I need to channelize these thoughts and kind of prioritize them and not let them overwhelm me. Now, that's not easy, easier said than done. अब मैंने सोचा कि ये जो सारे थॉट्स मेरे दिमाग को ख़राब कर रहे हैं और मेरे दिमाग में आए जा रहे हैं, मैं इनका क्या करूं? इनके ऊपर मुझे कुछ काम करना चाहिए. आई हैव टू प्रायोरिटाइज देम. सो मैंने सबसे पहला काम तो ये किया. सॉरी, दिस इज़ माई कप ऑफ टी. आई कांट बी विदाउट माई कप ऑफ टी. लेट मी टेक अ सिप एंड आई विल गेट बैक. Another one. I have
learned this over time that whenever you are feeling overwhelmed or you're stressed or you are in a panic mode, the first thing that can help you is taking a few deep breaths. So I straight away started my deep breathing. Now I don't do deep breathing in that ritual kind of a thing and to the point thing. All I do is take a deep breath and exhale. Take a deep breath and exhale. I do this only about, I think, 2 to 5 times, 2 to 5 times, and then I stop it. यूजुअली काम मी डाउन इनफ और मैं कुछ सोचने के काबिल हो जाती हूँ और मैं थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी सी आना शुरू हो जाती है थॉट प्रोसेस में. सो आफ्टर दैट डीप ब्रीदिंग मैंने सोचा कि मैं इन थॉट्स के बारे में सोचूं. थिंक अबाउट योर ओन थॉट्स. व्हाट आर द थॉट्स? यू हैव टू रिकग्नाइज the thoughts that are coming into your mind और उस पर ये सोचना चाहिए कि कौन कौन से थॉट्स हैं जो मुझे आ रहे हैं और उनमें से कौन से थॉट्स हैं जो मुझे ओवरवेलम कर रहे हैं. सो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आज लिस्ट की हैं, इनमें से सबसे पहली बात तो यही थी कि हाउ एम आई गोइंग टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई डे. And then 3 other things. So I started thinking that I have to put them in an order and think which one is the most important. So I think the first one was really important, that I have how am I going to spend my day. So I quickly thought a few activities. I could do them or not, that's a different story, but at least for that time, I was able to mm, think of a few activities to do so that I can go on with my day. So I thought I'll clean my room, mm, make my bed. Um, there are a few things that are lying here and there in my room. I'll put them where they are supposed to be. That's my another one of my हैबिट्स जो मुझे हमेशा से है. आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन. आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, बट दैट्स हु आई एम. आई नीड टू हैव एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस. सो मैंने पहले यही सोचा कि ये चीज़ें जो मुझे तंग कर रही हैं इस वक्त, जो मुझे इधर उधर में देख रही हूँ कि ये चीज़ अपनी जगह नहीं पड़ी हुई, मैं इनको अपनी जगह पे रख देती हूँ. सो वो कर लूँगी मैं. दिस इज़ अभी मैं प्लान कर रही हूँ. अच्छा, उसके बाद अब दिन का तो कुछ ना कुछ उसके बाद ये होता है कि आप कुछ खाना खाते हो, चाय पीते हो, आप किचन में थोड़ा बहुत कोई काम करने की अगर ज़रूरत है तो करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किचन में काम करने की ज़रूरत नहीं होती, मेरे पास घर में हेल्प है. एंड दैट हेल्प इज़ बिकॉज ऑफ माई अगेन माई बैक एक. I have to have somebody since I am kind of living alone. And there are tiny little things that I can do, like go into the kitchen again, organize a few things, or even do very little cooking. So, with that thought, I was able to push that back and dealt with it. My second thought was my backache, and very bad backache. An MRI was done. The diagnosis was
surgery or injections. I went for the injections. It did help me. It did help me. I wouldn't say it did not help me at all. It did help me about 50%. But even that के अच्छा इंजेक्शन भी लगवा लिया और पेन तो ठीक नहीं हुआ, पूरी तरह तो नहीं गया, व्हाट शुड आई डू? अब मुझे ख्याल आया कि अभी फौरी तौर पे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती इस मामले में, एक्सेप्ट फॉर टेकिंग माई मेड्स, जो आप पेन किलर्स आपने लेने होते हैं, जो मुझे डॉक्टर ने बताए मैं वो मैंने लेने ही लेने। सो मैंने कहा कि मैं वो ले लेती हूँ और फिर मैं उसके बाद प्लान कर लूँगी कि द डॉक्टर हैड ऑलरेडी सेड दैट यू कैन कम आफ्टर 2 weeks टू रिव्यू फॉर द रिव्यू। सो मैंने सोचा कि आज इस पे सोचने का फ़ायदा कोई नहीं है, एक्सेप्ट फॉर इट कि मैं कोई पेन किलर्स खा लूँ और फ़िलहाल मेरी ये दर्द ठीक हो जाए और मैं एक नॉर्मल डे अपना स्पेंड कर लूँ। सो इस तरह करके मैंने उस थॉट को भी आई पुश्ड इट बैक। आई वाज सक्सेसफुल। द अदर थिंग वाज माय फाइनेंसेस। नाउ दैट इज़ अ हार्ड टॉपिक टू डिस्कस राइट नाउ। और ये ऐसा टॉपिक है और ऐसा ख़्याल है कि अगर आपको आना शुरू हो जाए और आप थोड़े से परेशान भी हों, आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हों, तो उस बारे में आपका दिमाग तो उससे हटता है ही नहीं सिरे से। आपका माइंड जो है वो कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोचता जा रहा होता है कि अच्छा आपने ये पे करना है, ये पे करना है, ये लेना है, वो लेना है। एंड आई एम नॉट इनटू शॉपिंग्स। आई एम नॉट इनटू शॉपिंग। I'll make another vlog about it. What I buy and what I don't buy. That kind of a thing. So मैंने उस पर ये सोचा कि it's the end of the month. I'm definitely pressed hard. लेकिन अगेन वही बात कि आज तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती. So why am I thinking about it? Another couple of days गुजरेंगे, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, जो भी कोई आपके पैसे आने होते हैं और उसमें से वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी. 2-3 days गुजर जाएंगे. एंड ऑफ द मंथ मेरे ख्याल में तो हर एक के लिए बहुत मुश्किल होता है. देयर इज़ हार्डली एनीबडी हु इज़ नॉट स्ट्रगलिंग दीज डेज. बात में ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने अपने थॉट्स को चैनलाइज कैसे किया और मैंने उनसे अपने दिमाग को फ्री कैसे किया. सो मैंने उस थॉट को, फाइनेंसेस को भी थोड़ा सा पुश बैक कर दिया. और अब मेरे पास जो इम्पोर्टेंट टास्क रह गया था वो यही था कि मैंने डे कैसे स्पेंड करना है. और अब पूरे डे का मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ. सो उसके बाद यही हुआ कि मैंने जब चाय पी ली तो माय डॉटर हु lives close to me, she visits me every day. Thanks to her, God bless her. So she comes over and we have something together like tea or some snack or lunch. We talk. Sometimes we get very sad, we talk about sad things, sometimes we laugh. My son also comes and sits with us, and the three of us have a good time. In that process, 3 or more hours were gone. After that, I gave myself a little bit of haircut. I do my haircut myself. That took me about an hour. Said my prayers. दिन की नमाज़ें पढ़ी. आजकल डेज इतने लंबे नहीं हैं. It's January, so days are little shorter than the summers. So इस प्रोसेस में एंड कुछ चीज़ें कमरे की जब मैंने सोचा था कि इनको मैंने ठीक करना है, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैंने कबर्ड्स खोल दी और मैंने बॉक्सेस खोल दिए और मैंने लंबा चौड़ा काम कर दिया. नो, इट्स जस्ट
इवन कुछ चीज़ों के एंगल्स ठीक करने में भी आपको कुछ टाइम लग जाता है, एंड यू फील गुड अबाउट इट. And then I thought one more important thing, that I have been trying to read a novel, Gone with the Wind. I must have read this multiple times. I don't even remember how many times I've read this novel. I like it. And it's so old. It's so old. The pages are kind of have become literally brittle with time. Just look at them. Just look how the pages have become. I can't even repair them. And it's it's a beautiful feeling. It's a lovely and very calming feeling to be reading a book that's this old. The front page is gone. I don't know, if my camera was the other way around, then it would have caught the words in the right way. But, anyways, I love this book. Even the last page is kind of torn. So, I thought I'll spend, instead of spending my time on social media, although I am trying to be on social media, but like browsing throughout the night or late at night is quite an overwhelming thing, which I am working on, and I am trying to get rid of that habit and get back into the book reading. So that is how I channelized my thoughts today. It may not be a very scientific way of explaining things and very philosophical way of explaining things, or maybe a very a psychoanalysis of my thoughts. No, I'm not doing that. I'm no expert on such things. I just wanted to share this thing that I went through, and I thought it's worth sharing, and it's worth telling others as well how to deal with your thoughts. Talk to yourself. You can always talk to yourself. You are your best friend. You can't talk to your kids about your thoughts and your problems all the time. You can't talk to your friends, relatives on the phone. I mean, it's not good. It's not good. Nobody is going to listen to you talking about your problems all the time. So क्या ज़रूरत है? अपने साथ बात करें, खुद से उनको सॉल्व करने की कोशिश करें. आई एम श्योर थोड़ी सी एफर्ट करने से हम लोग अपने टाइम को सही मैनेज कर सकते हैं, अपने थॉट्स को ज़रा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं. आई होप दैट वाज हेल्पफुल. I really hope that it was helpful. I'll come up with some other things in my next video. So, take care until the next video. Thank you.